Hello everyone, this is me Akib Rana and today I have very good friend of mine Hamid Mahmood जिनकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है क्योंकि वो नाम से ज़्यादा अपने काम से पहचाने जाते हैं और ग्लोबली टॉप 10 मार्केट के अंदर रैंक करते हैं डिजिटल एजेंसीज के अंदर। बाकी वो क्या है, कहाँ से वो यहाँ तक आज पहुँचे हैं, ये सारा कुछ किस तरह से उन्होंने बनाया है और क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से एक सॉफ्टवेयर हाउस को चलाया जाता है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। हामिद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आस्किंग। हामिद, माशाल्लाह 2007-2009 से मैं आपको जानता हूँ। समहाउ इस्लाम दुआ हमारी रही है और हम एक दूसरे को मिलते रहे। एमबीए के बाद एक एमबीए करने के बाद कोई भी नॉर्मल बंदा ये नहीं सोचता है कि वो एक टेक्निकल फील्ड की तरफ जाएगा। वो हमेशा या तो मार्केटिंग की तरफ जाता है या बिजनेस की तरफ जाता है। तो आप इस फील्ड को आपने क्यों चूज़ किया? देखिए, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने सोची होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चाहा होता है। बिल्कुल। तो आप ये कह लें कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए चाहा, क्योंकि 2008 और 9 के दरमियान व्हेन आई वाज वर्किंग, so I started working back in 2005 and 6. ठीक। Back in 2009 I had no idea that I will be working for a technology company. So I was called by one of my friends that a technology company, they are looking for a resource they can depend on, who is honest and who they can rely for business development. So they called me up, and that was the first time I heard about HTML. Right. That was the first time I heard about WordPress. What the heck is it? Okay. Right. So it wasn't intentional. It wasn't pre-planned. Okay. But accidentally. It was made by God to give me a path for कि that. हामिद को ये वाला काम देना, उसकी ये जिम्मेदारी दुनिया में लगानी है। या शायद उससे पहले मेरी कोशिश होती थी कि कॉल सेंटर्स में काम करते थे तो अंदर से आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि यार ये कॉल सेंटर पे काम नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हामिद, अब मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, कितनी एजेंसीज चला रहे हैं और अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैंने आपकी वेबसाइट आपके नाम से पढ़ी थी, दी हामिद महमूद प्रो समथिंग लाइक hamidpro.com। इस हवाले से बताएं, ये अपना ब्रांड चलाना, फिर आप अपने हाउसेस चला रहे हैं, एजेंसीज चला रहे हैं, कितनी है, क्या है और क्या कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहले तो आप में जिगरा होना चाहिए छोटी एजेंसी चलाने का। टाइम होना चाहिए, उसके बाद जिगरा होना चाहिए। टाइम होता है। ये है जिससे जो काम करना है उसने कर लेना। मुश्किल काम है। हाँ। एक एजेंसी को संभालना मुश्किल काम है। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे अंदर मल्टीटास्किंग का इंग्रेडिएंट ना डाला होता तो शायद मैं ये सब चीज़ें ना चला। आपको नहीं लगता आजकल हर पाकिस्तानी के अंदर मल्टीटास्किंग आ रही है? नहीं, वो कहता है मैं हर काम कर लूँ बस। नहीं, मल्टीटास्किंग सिर्फ करना नहीं होता, उसको पार भी चढ़ाना होता है। ये बात ट्रू प्रो, दिस इज HTML प्रो। या एग्जैक्टली। अच्छा, अब कितनी एजेंसीज आप चला रहे हैं? देखिए, जो मेरी सबसे पहली और इसको राइट वर्ड क्या कहेंगे, एजेंसी कहूँ या सॉफ्टवेयर हाउस कहूँ, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो? क्या कहूँ मैं इसको? डिजिटल एजेंसी। डिजिटल एजेंसीज कह देते हैं। चलें, ठीक है, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं इन एंड वो डिजिटल होता है। ठीक है। और उसके डिजिटल के आगे से शाखें होती हैं, सॉफ्टवेयर उसकी शाखें, मार्केटिंग उसकी, ऑनलाइन मार्केटिंग उसकी शाखें। सही है। तो जो ग्लोबल टॉप 10 रैंकिंग्स पे एजेंसीज हैं वो नंबर 1 HTML Pro है। ठीक है। और उसके बाद Shopify Pro आती है इन Shopify डेवलपमेंट। आप गूगल करेंगे आपको Shopify Pro नजर आ जाएगा रैंक। और ये रैंकिंग ग्लोबली किसने की थी? CIO रिव्यू है, क्लच है, उसके अलावा डिज़ाइन रश है। डिज़ाइन रश में वी वर नंबर 1 कपल ऑफ मंथ्स बैक। राइट। और ये अमेरिका की है मेरे ख्याल से। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म होते हैं जो पूरी दुनिया में बेस्ट एजेंसीज होती हैं उनको रैंक कर रहे होते हैं। वी आर बेस्ड इन न्यूयॉर्क। So we have an office in New York, we have an office in Las Vegas, Dubai, Lahore, Islamabad, but majority of the operations that goes from New York in Midtown. ठीक है। अब लाहौर में आप कितनी एजेंसीज चला रहे हैं? लाहौर देखें, हमारे जो सेंटर्स हैं, ठीक है, so that's about like we have about 3 centers in Lahore. ठीक है। One is in Islamabad, ठीक है, one is in Dubai and 2 in United States. ठीक है। अब इस ऑफिस के अंदर आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? इसमें तकरीबन almost 14 है। 40 माशाल्लाह 40। We have 2 floors, so one floor you're sitting over here and one is downstairs. और क्या सर्विसेज आप यहाँ पर देते हैं? So we are actually, this is a headquarter where you're sitting right now. ठीक है। So we control
uh, we control the world from here. ठीक है. Because I'm sitting here, Mhm. so we have implementation partners. So apart from these three facilities, ठीक है. we have many implementation partners, which are in Pakistan, which are in Ukraine, Mhm. which are in other parts of the world. तो हम क्या ठीक है. करते हैं कि यहाँ से बैठ के so हम जैसा IBM है. So let me give you an example. Mhm. So IBM has 30 implementation partners That's जो कि good. उनके systems बना रहे होते हैं. So what we do is either we are working with our own in-house staff, ठीक. or we have external implementation partners who work as per our own standards. Mhm. So these guys that you see sitting over here, they control all the world from here. Nice, very nice. And then we have account managers based in New York, we have account managers based in Las Vegas and Dubai. ठीक है. अब थोड़ा सा मैं ना जनरली बात करूंगा कि सॉफ्टवेयर हाउस को चलाने के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितने लोगों के ऊपर एक HR होना चाहिए? मतलब इट कैन बी 40, इट कैन बी 10, इट कैन बी 5. एक HR का क्या रोल है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर? देखें, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स, एडमिन, these are the base of your organization. If ठीक है. you don't have human resource, so that means in the end who's going to work in your organization? Humans. ठीक है. So if you don't take care of their rights, then it's going to be a problem. देखें, ह्यूमन रिसोर्स वाला काम आप भी कर सकते हैं, ठीक है. आपका जो CTO होगा वो भी कर सकता है, या कोई और यहाँ पे डेवलपर बैठा होगा रिसोर्स ढूंढ के वो भी आपको ला के दे सकता है. एक रिसोर्स को ढूंढना और एक टेक्निकल HR को रखना और एक सिंपल HR को रखना, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कितना इम्पोर्टेंट है कि ये इतने लोगों के ऊपर एक होना चाहिए, या आपके पास डेवलपर कोई भी नहीं है तो एक HR का होना ज़रूरी है? कहाँ पे आके ज़रूरत पड़ती है? If you don't have any developer, then of course it doesn't make sense. Or if you have like spread a team of freelancers, so I'm not sure that having an HR would make an impact. HR is where you have to control people, you have to control the environment, and especially you have to control their rights, right? And Okay. being an entrepreneur, I would always suggest do not do micromanaging, right? Yes, at some level you have to do कि आप सबको एक पूरा रास्ता दिखा दें, but माइक्रो मैनेजिंग नहीं करनी चाहिए, आपको HR नहीं करनी चाहिए, आपको अकाउंट्स नहीं करने चाहिए. ठीक है. आपको entrepreneur is the best face of the organization. So entrepreneur should be used to get larger business. ठीक है. And that should be the focus. And pay some amount to the HR, put that as जो a आपको capital. रिसोर्स ला के दे, राइट्स करे, सारी Exactly. चीज़ करे. So all the admin related stuff, you should not be doing it. And do not make it like a 2-3 shop, because if you do that, you will remain 5 people shop in next 5 years as well, if you don't change your mindset. How much is difficult to find a skillful person? I think it's difficult. Because every year almost 25 to 35 students graduating every year, right? 25,000. 25,000, yeah, approximately. Yeah. तो बहुत सारे अब फास्ट के हैं, नस्ट के हैं, UCP, UMT लाहौर, everywhere is doing CS, SE, IT, CS, SE, IT, majority of them. तो क्या सोचते हैं कि उनमें से कितना इम्पोर्टेंट है कि उनको स्किलफुल होना डिग्री के साथ? Yes, skilled resources ढूंढना is the most toughest challenge that a software house have. We still have those challenges to find the right people, and people who say that they are the Shopify expert, they are the Laravel expert, they are the Right. US expert. Right. When you actually have them implement something, right, or at least maybe after couple of weeks or 4 weeks, you identify that all the things that he's talking about, he read a lot of blogs about it, Yeah. but when he's going to practically implement that, he's not able to do that, or not as he told in the interview. So the thing which is called probation. Yeah. Probation Very is well. actually to gauge this, that whatever you said in the interview, even though we can screen you, even though we can have an onboarding test for you, but still that cannot judge whether you'll be able to make $1 million software or not. So then you have to test the person. So what we do is we have a referral network of human resource. So we have a human resource team as well who check with the network if they possibly know someone who have seen their work, who have seen their references. Otherwise it's a hit and try, unfortunately. तो आप नहीं समझते इसमें पैसे ज़ाया होते हैं. 3 माह उनको लाख रुपया दिया, या फॉर एग्जांपल 1000 यूरो दिया, 1500 यूरो दिया, और उसके बाद आपने 3 माह बाद आपको पता चला यार ये तो काम का बंदा ही नहीं है. फिर क्या है, कैसे उसको मैनेज जुआ नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं. Yes, exactly. But So
if you get the right person, then you can make a lot of money with that. So if you don't get the right person, you have to waste the money too. ठीक है, अब दो कल्चर चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब मैं वहाँ पे भी देखता हूँ, यहाँ पे भी है, बल्कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा देखा है कि दो कल्चर क्या है कि खुद उठ के चाय बनाना, ठीक है, और ऑफिस बॉय को रखना। तो आप हमारे इस कल्चर के हवाले से क्या सोचते हैं कि क्या बेहतर है, ऑफिस बॉय को रखना या ना रखना? देखें, आपकी जो हायर मैनेजमेंट होती है, जिनके पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल अब शायद जैसे आप निकलेंगे, so I'll have back-to-back meeting till 5 p.m. Eastern time in US. I may not even have time to, think about anyone or even check my messages too. So someone like myself or someone who's on the higher management, I think it's productive that they should not waste their time, or spend their time 10-15 minutes when he's actually into the meeting. So I think it's good for higher management that someone can serve them. But for the regular people, yes, there should be a facility where they can go and grab the coffee and tea and they can roam around and maybe smoke something as well. एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस ऑफर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बचाते हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अंदर खाते तो थोड़ा बहुत पता है कि वो क्या चीज़ है। जो लंच ऑफर करते हैं, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर हाउस वाले या कोई भी कंपनी वाले दोपहर का लंच ऑफर करते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी के अंदर कितना फर्क पड़ता है? यार देखें, मेरा हमेशा एक असूल रहा है कि आप जिस चीज़ पे फोकस रहते हैं उस चीज़ के रिजल्ट्स आते हैं। अगर तो आपकी HR ह्यूमन रिसोर्स के पास बहुत सारा टाइम है और एडमिन के पास बहुत सारा टाइम है इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इट्स ग्रेट, ठीक है, बट इसके कर्ट्स भी है। मतलब एक तो मेन्यू कभी भी आप डिसाइड नहीं इनके लिए कर सकते। I've done that. मुश्किल, I've done that. I know. If you have like maybe 50 people in one building, they may have 50 likings. So you will not be able to meet their expectations. So खैर ये तो एक बड़ा डीप है ना, किसी को पसंद है नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, एक जेनेरिक ABC लंच है, वो कंपनी में होने से या ना होने से काम के ऊपर कितना असर पड़ता है कि अगर वो होगा तो वो अच्छा काम, मतलब उनकी जो माइंड है वो खाने से हटके, ऑब्वियसली आप सुबह अगर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 9-10 बजे आ रहे हैं, जेनेरिक टाइम में आ रहे हैं, तो 11-12-1 बजे वो सोच रहा है अच्छा कोड तो मैं लिख रहा हूँ तो यार अब तो भूख लग गई है, मैं क्या करूँगा? समझ रहे हैं? इस एन एक्टिविटी थोड़ा सा आपका ध्यान साइड पे भी जाना चाहिए। अगर आप 9 घंटे कोड के बारे में सोचेंगे तो वो आप बिल्कुल मशीन बन जाएंगे। 1 घंटे आपको खाने के बारे में सोच लेना चाहिए। चले ठीक है, मतलब कि इसके होने या ना होने से कोई ओकेजनल डिनर्स होने चाहिए, आपकी आउटिंग होनी चाहिए, उसका मैं बहुत ज़्यादा कायल हूँ। मेरी कोशिश होती है 1 महीने में 1 दफ़ा कोई ना कोई इवेंट जरूर करवा दूँ उनका, ताकि वो एक मोटिवेशन एक्स्ट्रा करिकुलर। सही। अच्छा हामिद, मुझे एक और चीज़ बताएं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब आप बनाना चाह रहे हैं, वो 2 की हो, 10 की हो, 20 की हो, 1000 की हो, उस स्ट्रक्चर को, उस हायरार्की को किस तरह डिफाइन करना चाहिए और किस तरह से लोगों को लेकर चलना चाहिए? जी, अच्छा, सबसे पहले होता है आपका प्री सेल्स, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर शुरू से लेकर एंड तक लेके जाऊँगा, ताकि हमारे जो साथी हैं जो 8-10 से शुरू करते हैं और अगले 5-10 साल के बाद भी 8-10 होते हैं, वो क्यों अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते, तो उसकी मैं आपको इसी में आपको रीज़न भी समझ आ जाएगी कि वो क्यों उसमें ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट होता है प्री सेल्स। आमतौर पे होता है ये कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं खुद ही सेल्स करने बैठे होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। So you should have a pre-sales department whose responsibility should be lead generation. When I say lead generation, so getting the new contacts who are looking for technology services, who are looking for digital services as per the right target persona. Right? So I told you that I've done a study from Harvard, Massachusetts for digital strategy as well. So this is one of my core strengths too. It's a course or it's a diploma? It was a certification. Certification. Okay. Yeah. Okay. So what you need to do is you need to have number 1 pre-sales team. ठीक है. Set up. Whose job should be to answer the basic inquiries and actually to land some business, to ask you some questions through majority of the channels you have. So it could be inbound marketing, it could be outbound marketing, whatever. Once you have that pre-sales team set up, then have a separate department who can actually close the deals for you as well. Right? So it's a sub network of pre-sales, but you should have dedicated closers in your team who can actually talk to the person, talk to the client in their language, get their specs, and
prepare estimates, and deliver to client until they are satisfied that they're getting the value. Okay. Right? And once you have the closing setup done, once you've got a certain project, then you should have an account management team. Right. Before this, don't you think this is the first and second pre-sales and the closing person, both these hierarchy also work in the call center as well? It works. Yeah. Because call center is also like business development or sales, Right. management. So what Right. I'm talking to you is, if you can, then set up even one person for pre-sales, one person as a closer. Then set up your at least a structure of the Structure of the organization. organization. So if you're not going to outsource your operations to a call center, Mhm. you can have that in house, Right. right? So after you've gotten a project, then have an account management team. Okay. मेक श्योर कि आपके जितने भी प्रोसेस आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आप सेटअप हो, उसके अंदर आप हर चीज़ स्पेक्स डालें, उसके अंदर हायरार्की सेटअप करें, सब कुछ करने के बाद अकाउंट मैनेजर को एक पूरा ब्रीफ दें। ठीक है। आपने क्लोजर कि आपने वो कैसे सेल लेके आए हैं और उसके क्लाइंट के साथ क्या कमिटमेंट है, उसकी टाइमलाइंस क्या हैं, उसकी कॉस्टिंग्स वगैरह क्या हैं। ठीक है। फ्रॉम अकाउंट मैनेजर, नाउ दिस शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंट मैनेजर from now onwards, he need to handle number one the vendor or the Okay. implementation partner he's working with, Mm-hmm. or the in-house team. Right. So जो account manager होगा, उसकी core responsibility should be to enhance the customer experience, deliver in time, Mhm. make Gantt charts, Mhm. clear structure, plan, execution, and then ensuring that project देने के बाद payments वगैरह देने के ठीक है। बाद उसने अच्छा review भी लिया। So ठीक set है। up their kits. So in our organization हमने pre-sales के, closer के, account manager के KPIs बनाए हैं, right? ठीक है। अच्छा, अब उसके नीचे account manager को production team report कर रही है हम्म। with the work. Now हम्म। production team has its own hierarchy. ठीक है। So if you're a bigger organization, then you should have a CTO. But if you're a normal organization, तो फिर एक project manager अच्छा सा रख के, what you can do is have the project manager and then have maybe 2 or 3 leads हम्म। or experts work under a project manager, ठीक है। right? And if you're a very small team, then have a team of developers to report to project manager. But ideal structure, CTO, ठीक और है। CTO के नीचे different project managers, ठीक है। project managers के नीचे different experts, experts के नीचे developers, designers, QA, UX, whatever. So Okay. have these departments differentiated कि UX का अलग department, ठीक है। business analysis का अलग department, फ्रंट एंड का अलग डिपार्टमेंट, बैक एंड का अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह R&D के हाँ। रिक्वायर्ड होती है, उसका अलग बिल्कुल, डिपार्टमेंट। ठीक है। So you need to have these departments, and then after you have done all this hierarchy setup, have a reporting line setup ठीक है। कि उनकी डेली, वीकली, क्या मंथली काम चल रिपोर्ट रहा हो, है। हाँ। and then at the same time have some compliance setup as well कि आपकी प्रोडक्शन टीम की कंप्लाइंस कौन कर रहा है, एक लड़का उसकी कंप्लाइंस सेटअप कर ले, आपकी सेल्स टीम की कंप्लाइंस क्या कर रहा है, या किसी ने, आप देखते होंगे कॉल सेंटर्स के अंदर QA के लड़के बैठे होते हैं कि फेक सेल तो नहीं कर दी, झूठ तो नहीं बोला किसी के साथ, ओवर कमिट तो नहीं कर दिया। सो कंप्लाइंस या आपसे कहें जवाबदेही should be there for the production team and sales team. So this is the best organizational model for running a ठीक है। digital agency. नाइस। ये तो बहुत नॉलेज इनहैंस किया आपने, मेरा भी और देखने वाला का भी। अब देखें चीज़ों को जितना बड़ा करें, किसी का भी जो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन है या आइडिया है, उनको बड़ा करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन स्मॉल स्टेप के अंदर या छोटा करने में सबसे ज़्यादा मसला आता है। अब एक बंदे के पास एक प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है, उसे पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं अकेला नहीं कर सकता, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, अब मैं एक अपना मतलब टीम मुझे ग्रो करनी है, तो उसकी आप टीम हायरार्की किस तरह से डिफाइन करेंगे? बड़े की हमने डिफाइन कर दी है, छोटे की हम किस तरह से करेंगे? आप ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैंने आपको रोल्स कौन कौन से बताए हैं? प्री सेल्स, क्लोजर, अकाउंट मैनेजर, CTO, प्रोजेक्ट मैनेजर, एक्सपर्ट, उसके बाद डेवलपर्स, डिजाइनर्स। व्हाट यू कैन डू इज, अब आप डिसाइड करें, आप कहते हैं यार इसके लिए मेरे पास बंदे ही 2 हैं, हाँ। फिर आप हर जगह अपना नाम लिखें, हाँ। बट आपको वो रोल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कि यार प्री सेल्स का बंदा भी मैं हूँ, क्लोजर भी मैं हूँ, अकाउंट मैनेजर भी मैं हूँ, हाँ
प्रोजेक्ट मैनेजर भी मैं हूँ, हाँ नीचे डेवलपर एक एक्स्ट्रा बंदा है, हाँ नीचे डिजाइनर एक अलग बंदा है, ठीक है। तो हायरार्की यही रहती है, बट आप रोल्स को अपने ओवरलैप करवा देते हैं क्योंकि मेरे पास तादाद कम है, आई कैन नॉट बियर इट, आई डोंट हैव कैपिटल, आई डोंट हैव इन्वेस्टमेंट, तो ये ज्यादातर रोल मैं खुद ही करूंगा, बट इवेंचुअली होता यही है, हाँ। आप ये सारे काम कर रहे होते हैं हाँ। अनकॉन्शियसली, और फिर जब आप देखेंगे व्हेन यू हैव सफिशिएंट रेवेन्यूज तो फिर आप वो फिल करने लग जाएंगे गैप्स। ठीक है, वेरी नाइस। देखिए हमने बड़ी चीज़ को भी कवर किया, छोटी चीज़ को भी कवर किया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपने जो रिसेंटली सर्टिफिकेशन की है हार्वर्ड से, उसमें से कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ है जो आपने सीखी है और आपने कहा कि यार मेरा फुल पैसा वसूल हो गया? देखें सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको रेडीमेड चीज़ नहीं मिलती। एग्जैक्टली, हमेशा एक चीज़ को स्ट्रेटेजाइज किया जाता है और उसको टाइम दिया जाता है और क्लोज लूप किया जाता है। तो जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी वो ये कि स्ट्रेटजी के बगैर मार्केटिंग ना की जाए, और जो स्ट्रेटजी बनाए उसके अंदर वेल डिफाइंड प्लान्स हों, ठीक है, और उन प्लान्स को टाइम दिया जाए, कैपिटल अच्छा रखा जाए, ठीक है। इवन ई कॉमर्स स्टोर है तो आई वुड से कि यार उसको $20-30,000 से कम कैपिटल में नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको कैपिटल रखेंगे, मार्केटिंग बजट्स रखेंगे, और वन थिंग कि आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस उसको जितना आप इन्हांस करेंगे और क्लोज लूप रखेंगे आपकी बिजनेस की सक्सेस है। ऑडियंस को क्लोज लूप करें। बेसिकली जब आप एड्स चला रहे होते हैं तो क्या होता है, आप ऑडियंस अपनी बढ़ा रहे होते हैं, न्यू ऑडियंस को सर्च कर रहे होते हैं, जब आप सर्च करेंगे और आप एड्स बंद कर देंगे वो ज़ाया हो गया, तो आपने एक तो ऑडियंस को बढ़ाना तो है, उसका क्लोज लूप करना, उसका फनल बनाना है, ठीक है, कोशिश करनी है उनके ईमेल्स आ जाएं, कोशिश करनी है उनको आप अच्छे कंटेंट दे के उनको आप क्लोज लूप कर लें, ठीक है। और जब आप उनको क्लोज लूप कर लेंगे तो दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, ठीक है। और जो कस्टमर्स होते हैं वो आपको सेल तब देते हैं, आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं आप सेल क्यों लेते हैं, उससे परचेज क्यों करते हैं, व्हाई? जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है शायद, और कई दफ़ा ऐसा होता है वो मुझे नंज कर रहे होते हैं, हर एक से परचेज कर लेते हैं, हर एक से तो नहीं, या देयर आर फ्यू ऑफ देम। दराज से क्यों परचेज करते हैं? I didn't buy anything from Daraz so far. Amazon से? Yeah, Amazon क्यों? so much. Yeah, घर बैठी चीज मिलती है, और ठीक है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, पसंद नहीं है वापस कर दो, दो इट्स मैक, दो इट्स चाइना, स्कैम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? no आपको कैसे पता लगा? So far there is no possibility. You heard from people? No, I'm telling you what I have experienced, right? I'm not telling you what I have heard from people. I use that. What I received, what I have, okay, I go into the details, read the reviews, saw the pictures, then I order that. Right. अभी आपने क्या कहा? इससे second last चीज आपने क्या? Reviews and pictures. Reviews. Why do you see reviews? To see the quality of the thing. To see the quality Yeah, of the things. always. Now it answers you. So Yeah. what happens is that to make a purchase, because all these digital strategies in the end are for you to actually become the customer. So for you to make a purchase, you need trust. And how do you build the trust? Number one, there are phases. Brand awareness. Yeah. You start. Okay. Because if you start an e-commerce store, nobody's gonna know that unless you tell them what you do. Okay. So the first phase is what you do, and then brand recognition. They start recognizing you, who you are, ठीक है, what you do, ठीक है, and once they know who you are, what you do, and then what are your prices, what value you bring, and then you expose people with the content by putting them on your site, by showing the videos, ठीक है, by white papers and everything. Then the next step is you make a purchase when you ठीक trust है, them, right? And then when you make a purchase, then you become brand advocates. यार Amazon से purchase कर लो, यार दराज से purchase कर लो. That's what you call brand advocacy. So unconsciously it's a loop from brand awareness, recognition, purchase to brand advocacy. वो एक पूरा loop बन जाता है, right? So this is the most important thing कि यार आपने अपने customer को एक close funnel में डाल के, ठीक है, उसको कभी फिर जाने नहीं देना आपने. सही है। ऑलराइट जी, दैट वाज द सेशन विद हामिद महमूद, और ये 35-40 मिनट्स जितने भी थे मेरे इनके साथ बहुत अच्छे गुजरे आज के। मजीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मजीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।